Hello everyone, welcome to GATE-NET series classes. So today we are going to discuss some more questions related to our research aptitude. So today we are having our part 2. Yesterday I have given one video on part 1 in which we have discussed some of the MCQs, and further today we are having part 2, okay, related to our research aptitude for your UGC NET paper 1, that is your general paper. So here I have given my contact number also. If you people are having any kind of query or something, you want to ask something, then you can contact me on this particular number, okay. This is my contact number. And further we are launching one complete course on your paper 1, complete course for paper 1 with MCQs, okay. This will be your paid course, and I am launching this course on one of the private app, okay. It will be launched on a app, and the course fee details and everything I will be displayed on like one video I will record on that, in which I will provide entire information about the fee structure and everything, every detail over there. And it will be about the paper 1, okay. Complete syllabus of paper 1 we will be discussing over there, every unit. Like we are having 10 units now for paper 1, so all the 10 units we will cover, and later on we will discuss MCQs also, the PYQ questions also we will discuss in that course. And furthermore we will also practice mock tests, okay. Mock test also we will practice over there, and I will design my own questions also, as I have worked as a content writer for paper 1 and paper 2 CS. So I will be designing some of the mock test also for you people. And after mock test, okay, you can analyze your ranking also over there on that app. Fine. So this is the somewhat detail about that paper 1. It would be your paid course. Fine. It would be a paid course in which we will be having each and everything related to your paper 1. So if you want to cover the paper 1, you can contact me, okay. From next Monday we are going to launch that course. From next Monday, okay. Remaining detail I will be providing very soon. Done. So let us discuss our further questions. So here I have given my Telegram link and WhatsApp group link, and furthermore the channel link also. So these first, second and third question I think we have already covered in the previous lecture, right? So let us discuss our fourth question. Okay. So here we are having our fourth question. The question is, the fish bowl draw is a method of drawing an, okay. So fish bowl draw method, it is one of the method, okay. It comes under which of the category? So we are having some sampling types over here. The first one is independent sample, second has structured sample, then third one is non-random sample, and fourth one is random sample. So we have to identify the correct answer, okay. तो इसका जो आंसर है that is your random sample. जो fish bowl draw होता है ना, fish bowl draw जो है, it comes under your random sample. Why it comes under random sample? Like if I take a bowl, okay, it is your bowl, let's say. It is also called as lottery method also. Lottery method क्यों कहा जाता है? Why it is called as lottery method? हमने देखा होगा sometimes we are having an example like this, in which a bowl is having the many lotteries or tickets, okay, and we have to pick one of the ticket from this particular bowl, okay. Any random ticket you will be able to pick, right? At randomly you will pick one of the ticket from this particular bowl, right? So it comes under your random sampling. So remaining all options are incorrect. Fine. So here I have taken some explanation for this particular question also. The sampling means that you are having a population, okay. You are having a population, a collection of persons or data on which you will perform your analysis or whatever you want to perform, ठीक है. एक ऐसा डेटा होगा आपके पास, एक कलेक्टेड डेटा होगा जिसमें आपने कोई भी किसी भी तरह का जो है एक्सपेरिमेंट और एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इफ यू वांट टू डू आप उस पर कर सकते हैं, राइट. इट वुड बी योर सैंपल. The sample will be having the data, ठीक है, collection of data. So broad category हम लोग discuss करें तो we are having three categories, that is random and probability sampling. So random को ही हम लोग जो है कहते हैं probability sampling. Next आता है if I talk about non random
अगर रैंडम को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, देन नॉन रैंडम विल बी कॉल्ड एज द योर non probability sampling, right? And the third category, it will be your mixed, fine. The third category is mixed, in which it will be having random and non random sampling, fine. So let us discuss one by one. तो सबसे पहले आई हैव गिवन फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर, ओके, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज रैंडम. रैंडम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑल्सो. अभी यहाँ पे क्या होता है इन दिस टाइप, ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन, ओके, ईच एलिमेंट जो भी आपका कलेक्टेड डेटा होगा उसमें हर एक एलिमेंट को इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस मिलता है कि वो सेलेक्ट हो पाए, ठीक है. लाइक अगर फिश बाउल की एग्जांपल ले, वी आर हैविंग मल्टीपल टिकट्स, ओके, मल्टीपल टिकट्स ओवर हियर एंड यू हैव टू पिक one of the ticket from the bowl, okay, only one of the ticket, any ticket will be picked, okay, any ticket will be picked. So I can say that every ticket, like in this bowl I am having 8 tickets, right, 8 tickets, all the 8 tickets will have equal and independent chance कि वो सिलेक्ट हो पाए, ठीक है. जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, राइट, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ इट, राइट. सो एवरीवन इज गेटिंग द इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस. नेक्स्ट आता है इक्वल का मतलब हम लोग समझ गए, राइट. every element it is having the equal opportunity to get selected over there, fine. And independence means that the choice of one element, अगर आप एक सिलेक्ट करते, it is not dependent upon the choice of another element, फाइन. आप किसी को भी पिक कर सकते हैं. सो अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विच इज ऑल्सो इन शॉर्टकट यू कैन से इट इज SRS. तो इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज कंप्लीटली रैंडम जजमेंट, राइट, रैंडम एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट यू कैन से दिस. एंड अंडर दिस यू आर हैविंग सम टाइप्स, फर्दर टाइप्स. द फिश बाउल ड्रॉ, as I have discussed, the fish bowl draw, it comes under your random sampling. जहाँ पे क्या होता है, your total population is small होती है population, and from that particular small population you have to pick one of it, right. Let us take an example कि नंबर दिए गए हैं अलग अलग स्लिप को, सेपरेट स्लिप इज हैविंग द सेपरेट नंबर एंड इट इज पुट इनटू द फिश बाउल या फिर एनी काइंड ऑफ कंटेनर. आपने अच्छे से शफल कर दिया, यू जस्ट शफल्ड इट, ओके, शफल सारा शफल करने के बाद उसमें से एक आपने क्या करनी है, स्लिप निकालनी है. रैंडमली यू विल पिक वन स्लिप, ओके. सो आई कैन से इट एज अ लॉटरी मेथड ऑल्सो ना, lottery method, any of the ticket can be picked, any of the slip can be picked by you, right. Next category is using a computer program. So some computer programs are designed, मतलब we are having some softwares also, fine. some computer programs भी हैं जिसके थ्रू आप रैंडम सैम्पलिंग में से कुछ एक रैंडम टिकट सैंपल को एज अ सैंपल या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है टेबल ऑफ रैंडमली जनरेटेड नंबर्स. अगर एक टेबल है वो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर देता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर दिस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. तो यहाँ पे वी कैन से these all are the methods that take this type, probability sampling या फिर random sampling पे based है, fine. So हमारा क्वेश्चन तो ये था ना, fish bowl draw method कौन सा था, it comes under your random sampling, fine. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन, that is pilot study is also called as. तो जो पायलट स्टडी है इसको और क्या कहा जाता है, तो वो डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं B, C एंड D. डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, देन कोरिलेशनल स्टडी, एक्सप्लेनेटरी स्टडी. पहले एक बार रीड आउट करेंगे, बट आप लोगों को यू हैव टू रिमेम्बर दैट जो पायलट स्टडी है उसको क्या कहा जाता है, द पायलट स्टडी इज कॉल्ड एज योर फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है. पायलट स्टडी को क्या कहा जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है. जस्ट रिमेम्बर दिस, ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि पायलट स्टडी को फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है. अब क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन था, इट वाज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, डिस्क्राइब करना, कंप्लीटली डिस्क्राइब करना, फाइन. इट एम्स टू प्रोवाइड यू द एक्यूरेटली, आपका एम क्या है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपने एक्यूरेटली बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में यू हैव टू डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन, ओके.
बिल्कुल एक्यूरेट भी करना है एक्सप्लेन चीजों को, एंड सिस्टमैटिक वे में भी पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करना है। पॉपुलेशन हो गया, एनी काइंड ऑफ डेटा हो गया, राइट, एनी फिनोमिनन हो गया, एनी your process हो गया, anything on which you are going to perform your experiment, it has to be very accurate and systematically you have to perform each and everything over there, right? तो यहाँ पे क्या क्या आंसर होता है, it can answer what, where, when, how questions, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपने लिया हुआ है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लिया उससे रिलेटेड आपको ये सब कुछ मिल जाएगा अगर आप डिस्क्राइब करेंगे एक चीज को कि वो चीज क्या है, व्हाट इट इज, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सब चार चीजों का आपको आंसर मिल जाएगा। बट एक चीज का आंसर नहीं मिलता, वो है व्हाई। व्हाई दिस प्रॉब्लम, व्हाई दिस क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा सब कुछ आप वहां पे डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है, कहते हैं कि ये बहुत सारे रिसर्च मेथड्स में जो है यूज होता है। क्यों? अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सीबीआई की एग्जांपल ले लो, किसी केस पे आपने इन्वेस्टिगेट करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, you have to describe the complete problem, then only you will be able to understand or analyze or completely to solve that particular problem, right? तो ये हो जाता है हमारे पास descriptive research. If they talk about investigation, then you will conclude it with the descriptive research. अब अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, अब यहाँ पे क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, द रिसर्चर डज नॉट कंट्रोल और मैनिपुलेट एनी वेरिएबल्स, ठीक है, आप खुद से मैनिपुलेट नहीं करते, जैसे जैसे उसमें चेंजेस आएंगी ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होंगी, बट ओनली ऑब्जर्व्स एंड मेजर्स दैम, ठीक है, मेजर्स दैम। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिजिबिलिटी स्टडी? ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट, जो आपने इंटरवेंशन की है क्या वो अप्रोप्रिएट है, सो दैट फर्दर आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सके उस पे, ठीक है। In other words we can say that they enable the researchers to assess whether or not the ideas or findings, जो भी आपने ideas या जो भी आपने रिसर्च किया, योर फाइंडिंग्स जो भी है वो रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और नॉट, इट वुड बी सस्टेनेबल, मतलब लॉन्ग टाइम वो चीज हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी, इट डिपेंड्स, ओके, दैट इज योर फिजिबिलिटी स्टडी। आपने देखना है कि जो आपने किया है सही किया है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, द पायलट एक्सपेरिमेंट, पायलट एक्सपेरिमेंट को पायलट स्टडी भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायलट टेस्ट, then it is also called as pilot project. It is a small scale, मतलब छोटे लेवल पे, ठीक है, प्रीलिमिनरी, सबसे पहले करने का, शुरुआत में, ठीक है, in the beginning only you have to perform this, right, study conducted to evaluate the feasibility। तो इससे पता लग जाएगा कि वो चीज जो है सॉल्व करने लायक है, आपके सुटेबल है कि नहीं है, कितने टाइम पीरियड का होगा, द ड्यूरेशन इट विल टेक टू गेट सॉल्व, राइट, दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द कॉस्ट इट विल टेक, देन कुछ अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर में तो वो क्या पड़ेंगे, देन इम्प्रूव अपॉन द स्टडी डिजाइन। अगर आपको लगता है यू हैव टू परफॉर्म सम मोर मॉडिफिकेशंस और सम काइंड ऑफ चेंजेस सो दैट इट कैन बी इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर, सो दैट आल्सो यू विल परफॉर्म, राइट, सो दैट इज योर फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी ही आपकी क्या कही जाती है, इट इज कॉल्ड एज पायलट स्टडी, फाइन, इट इज कॉल्ड एज पायलट स्टडी। आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट द थर्ड ऑप्शन जो वहां पे गिवन था, द थर्ड ऑप्शन दैट इज योर कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल क्या होगा, द नेम as its name represent, correlation means that you are correlating two things, right na? It investigates the relationships between variables, ठीक है, you have to find out the relationship between the variables, and the most important thing over here is without the researcher controlling or manipulating any of them, ठीक है, कोई रिसर्चर जो है कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा, कुछ मैनिपुलेट नहीं करेगा, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि एक के चेंज करने से दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, you have to identify the relationship between the two variables, fine, if I read out from here, a correlation reflects the strength
एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डील विद ओनली टू वेरिएबल्स, यू कैन टेक टू एंड मोर वेरिएबल्स, ठीक है। द डायरेक्शन जो है एक के चेंज करने से दूसरे में, it can be your positive also, it can be your negative also. So this was your correlational, it was your this correlational research. Fine. So next is your explanatory. जो फर्स्ट गिवन था इट वाज योर डिस्क्रिप्टिव ना. नाउ द फोर्थ ऑप्शन दे वर प्रोवाइडिंग टू यू, इट इज योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा रिसर्च मेथड है जो कि एक्सप्लोर करता है कि व्हाई समथिंग अकर्स. ठीक है, अगर कुछ हैपन हुआ है तो वो क्यों हुआ है, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना है कि अगर कोई चीज हैपन हुई है वो चीज हैपन क्यों हुई है, एक्सप्लेन कीजिए तभी हमें पता लगेगा. ठीक है, व्हेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं है, एक छोटी सी स्टेटमेंट दी है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट स्मॉल स्टेटमेंट यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपेंड, दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, व्हाट विल बी द लाइक बेनिफिट of this explanatory research, it can help you to increase your understanding. ठीक है, जो भी आपको रिसर्च टॉपिक मिला होगा आपकी उस टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, यू विल बी लाइक कंप्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फाइन, देन इट अजर्न हाउ क्यों. ठीक है, हाउ कैसे एंड व्हाई, क्यों और कैसे जो है पर्टिकुलर फिनोमिनन पर्टिकुलर प्रोसेस हुआ है, और अगर हुआ है देन व्हाट विल बी द फ्यूचर आउटकम आल्सो. ठीक है, द फ्यूचर आउटपुट आल्सो विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, that can also be identified by you if you perform the explanatory research on something. So this is about your एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. ठीक है, मतलब कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दो, सब समझ जाओ, अब का भी एंड फ्यूचर का भी, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, दैट इज योर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. The next question is your the conceptual framework in which a research is conducted. Fine. एक framework, एक structure जो design किया जाता है, the structure, or I should say the systematic structure, fine, या design on the basis of what you perform your complete research. ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा रिसर्च जो है वो परफॉर्म करना होता है, तो वो क्या होता है, दैट इज योर रिसर्च डिजाइन. सो अंडर रिसर्च डिजाइन यू आर हैविंग प्रॉपर स्टेप्स. ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 7 स्टेप है तो आपको सॉरी 1 बाय 1 ही वो परफॉर्म करना है एंड फाइनली 7th स्टेप पर जा करके आपका जो रिसर्च है वो कंप्लीट होगा. ठीक है, योर रिसर्च विल बी कंप्लीटेड आफ्टर परफॉर्मिंग योर 1 to 7 स्टेप्स. ठीक है, सो द ऑप्शंस गिवन है वो है सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च पैराडिगम. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या होता है कि व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द अदर ऑप्शंस आल्सो. ठीक है, द 4 ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड टू यू ओवर हियर. You can see the 4 options are provided, right? If it is the answer, I am also explaining the other incorrect options also. Why? तो इससे क्या होगा, आपका ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा. ठीक है, you will be able to cover this topic also, then this also. So likewise, what will happen, you will be able to understand the 4 topics in a single MCQ. ठीक है, एक एमसीक्यू के थ्रू आप जो है 4 टॉपिक को कवर कर जाएंगे. ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का इफ आई एम सेइंग दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? सो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. फाइन, दिस इज द राइट वे. तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिसर्च साइनॉप्सिस. साइनॉप्सिस क्या होती है कि मतलब एक समरी की फॉर्म में आप, मतलब मैं 12 पेजेस में अपना पूरा का पूरा रिसर्च एक्सप्लेन कर दूं और मैं अपने हेड को वो दिखा दूं. सो दिस इज माय एंटायर रिपोर्ट, इट वुड बी having all these topics, right? It would be only a summary, it will contain only summary. जो आपके रिसर्च कंप्लीट रिसर्च होगा, ठीक है, वो कंप्लीट रिसर्च होगा लाइक 150 पेजेस का. ठीक है, the synopsis it will have only the summary with 10 to 12 pages, let's say, or I can say the 1000 just a second, 1000 to 4000 words. Just a second.
So I can say what the synopsis or summary will have. It will contain only 1000 to 4000 words, or I can say 10 to 12 pages. It will have some sequence. Okay, it will have some sequence कि सबसे पहले you have to explain about the title, then introduction बताएंगे, then about the literature review. अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंटायर रिसर्च परफॉर्म करने का, देन हाइपोथेसिस आपको बतानी है, हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट. आई विल टेक one separate lecture on this also, hypothesis. Then what are the methodologies you will use to perform this particular research, and finally from where you will take the help, from where you have taken the help, you can see. ठीक है, तो रेफरेंस में आपने बताना है कि the different places or different the members from where you have taken the help, or you will take the help if you are going to do it in future, right. So this will be your synopsis. Then let us come to the research design. अब डिजाइन में क्या होता है, ये एक ब्लूप्रिंट है. इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर कंप्लीट रिसर्च, राइट, द साइंटिफिक स्टडी. तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल इंक्लूड डिफरेंट मेथडोलॉजीज, द टूल्स you can use, or you will use the techniques to conduct the complete research, to solve the complete problem you are given, right. It helps to identify, आपको यहाँ पे आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे प्रॉब्लम को, एड्रेस भी कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या सॉल्यूशंस आ सकते हैं इस चीज के, उस चीज को भी सोच पाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. इफ आई से कोर प्रिंसिपल्स क्या है एक अच्छा द साउंड रिसर्च डिजाइन के लिए, पहले तो कंप्लीटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है. देन आप लिटरेचर जो है उसको रिव्यू करेंगे अराउंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. उसके बाद आप कुछ अजम्पशंस लगाएंगे, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स देंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है. देन कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे कि जो डेटा है वो कंप्लीटली लाना कहाँ से है, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द कंप्लीट सैंपल और द डेटा ऑन विच you are going to perform the operations, right, जो जिस पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. then defines how the data will be interpreted, आप किस तरह से उसको समझेंगे, finally solve करेंगे, and further it will have some steps, and finally you will be able to solve the complete research problem. okay, आपने रिसर्च कर लिया. देन तो यहाँ पे क्या है, ये है कंप्लीट रिसर्च डिजाइन. तो इसके आगे आप फर्दर काम करेंगे फाइनली कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए. तो आई होप रिसर्च डिजाइन आपका कंप्लीट है. देन यहाँ पे आता है कि देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रिसर्च डिजाइन. अब रिसर्च डिजाइन के भी आपके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस तरह का होना चाहिए. सबसे पहली बात है, जो रिसर्च डिजाइन है इट मस्ट बी वैलिड. ठीक है, वैलिड होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए. इट मस्ट बी वैलिड. कहते हैं कि बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है. आप कह सकते हैं राइट प्रोडक्ट, ठीक है, राइट प्रोडक्ट. कहते हैं कि बहुत सारे वेज होते हैं कि यू कैन मेजर द रिजल्ट. फाइन, जो आपने रिसर्च में किया होगा उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे वेज होंगे, बट एक बहुत अच्छा वे जिससे आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले जो आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है. बट द गुड रिसर्च डिजाइन, इट वुड बी द गुड रिसर्च डिजाइन इफ यू आर एबल टू लाइक if you are able to select the right tool in order to judge the right result also, okay, according to your need, according to your objective, that is your validity. जनरलाइज होता है, अगर आपने एक सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, एक आपने सोल्यूशन निकाला है एक इशू का, एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला है, एंड इफ आई एम हैविंग द सिमिलर इश्यूज लेटर ऑन ऑल्सो, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज मुझे फ्यूचर में भी आए, क्या जो आपने सोल्यूशन दिया था ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्या ये पर्टिकुलर सोल्यूशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा. इफ इट इज सूटेबल, if it is suitable for all the other issues also which are similar, which are having similar kind of problem statement, right, that is your generalized solution. It would be called as a generalized solution, right. neutrality क्या होती है, neutrality कहते हैं कि जब भी whenever you have to perform the research ना, you have to take some assumptions, ठीक है, आपको कुछ assumptions लेनी पड़ती है कि that will be tested during the result, किस इस तरह से होगा, ठीक है. अब जो आपने assumptions ली हैं it must be unbiased,
किसी के फोर्स में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के, यू मस्ट नॉट टेक एनी काइंड ऑफ लाइक assumption, the tentative statement और tentative solution. फाइन, इट मस्ट बी अनबाइस्ड. आप फ्री होकर के प्रॉपर रिसर्च करके यू आर प्रोवाइडिंग वन न्यूट्रल रिजल्ट, वन न्यूट्रल रिजल्ट. ठीक है, दैट इज योर न्यूट्रलिटी. डन है. सो हियर आई हैव टेकन सम मेजर एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. फाइन. तो नेक्स्ट हमारे पास है रिसर्च हाइपोथेसिस. Now we have to understand what is the hypothesis. It is really very important topic. Okay, very important topic. They always ask 1 to 2 questions related to this particular word, hypothesis. You will see this word 2 or 3 times, okay, in your exam. So it is a statement, or I can say the tentative assumption or tentative statement that introduces a research question, जिसके थ्रू हम रिसर्च क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, वो हम बताते हैं. ठीक है. सो ये एक इंटीग्रल पार्ट है कंप्लीट साइंटिफिक मेथड का, जहां पे यू विल परफॉर्म मेनी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. देयरफॉर you have to be very careful while doing this, and thoroughly you have to perform, okay, thorough when building your research hypothesis. So it must be डन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से जो है आपको परफॉर्म करना है. ऐसे ना हो कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड कुछ और है, आप कुछ और ही लिखते जा रहे हैं स्टार्टिंग में कि ये रिजल्ट होगा. तो दिस मस्ट नॉट बी द केस, राइट. सो इट इज योर रिसर्च हाइपोथेसिस. सो लेट अस रीड अगेन. हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि ऑफ एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स और द एक्सपेक्टेड आउटकम इट कुड बी, राइट. सो इट इज ओनली एक्सपेक्टेड थिंग, the tentative thing only. Fine. When the hypothesis is used, the purpose क्या होता है हमारा? To find out whether or not hypothesis is supported by the data. जो हमने हाइपोथेसिस किए हैं वो इस पे सूटेबल होगी कि नहीं होगी. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, राइट. नेक्स्ट आता है हमारे पास the several steps are involved in stating a hypothesis. अलग अलग steps जो है यहाँ पे hypothesis में लिए जाते हैं. तो पहला है हमारा deriving the hypothesis from a theoretical framework. ठीक है, एक theoretical framework को आपको first of all you have to understand the theoretical framework, then you will derive some accurate level hypothesis, right. Then you will design it. You will design some independent and dependent variables for your research topic, right, in the form of your hypothesis. Then finally you will write all the things, you will state all the things, the complete assumption, the expected outcome, the expected relationship between 2 or more variables, everything you will state over there. Fine. So these are the common steps while preparing your research hypothesis. Done. So we are having many categories actually. Here I have taken only 2 categories of hypothesis. पहला है alternative hypothesis, एक है आपके पास null hypothesis. So alternative hypothesis क्या होता है? Alternative means 2 things we are having, right? It predicts there is a relationship between 2 variables. ओके आपने 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. ऑल्टरनेटिव का मतलब ही क्या होता है? 2 थिंग्स, राइट. 2 थिंग्स, 2 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? प्रिडिक्ट्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स. आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि उनके बीच में, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. दैट इज योर नल हाइपोथेसिस. डन. सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज. नेक्स्ट आता है हमारा जो 4th ऑप्शन गिवन था इन योर क्वेश्चन. द 4th ऑप्शन इन योर क्वेश्चन वाज रिसर्च पैराडिगम. चेक करें वापस जाकर के कहाँ पे था ये. सो फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, हमने ये भी लर्न कर लिया क्या होता है, ये भी अंडरस्टैंड कर लिया. देन वी आर ऑल्सो डन अबाउट दिस रिसर्च हाइपोथेसिस. लेट अस डू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रिसर्च पैराडिगम. अगेन इट इज very important topic your under your research. Then so here we are having
So 3 or 4 terminologies you will be able to learn over here, fine, on this particular slide. So what is research paradigm? It is again a framework, but it is in the form of into which the theories and practices of your discipline fit to create the research plan. Fine, you will take some theories, you will practicize something, okay, everything you will be able to do over here so that you can create a perfect research plan for your research. That is your paradigm. Okay, so this foundation will guide you how to properly plan the research, how you will conduct each and everything. That guidelines will be provided over here in the form of some theories, some practices, some past experience, right? It will include the aim of study, okay, why you are doing this, then the different research questions related to that particular topic, और क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स आप क्या यूज करेंगे, फाइन, देन डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस मेथड्स भी इसमें हम लोग जो है उसकी भी बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। तो वी कैन सी हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, 3 पिलर्स होते हैं रिसर्च पैराडिगम के। Why we are doing this? In order to create a proper research plan, right? So under this we are having a research paradigm. So here we are doing 3 pillars, 3 important pillars under your research paradigm. One is ontology, epistemology, methodology. Methodology, you are able to understand the different methods you will use, ठीक है, अलग अलग तरह के जो मेथड्स आप यूज करेंगे, दैट इज मेथोडोलॉजी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑन्टोलॉजी एंड व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। तो इसके बारे में डायरेक्ट दे कैन आस्क यू वन क्वेश्चन आल्सो, you must know the exact definition for these 2 terms. The first one is ontology. So ontology means that the reality, okay, the reality, the actual reality about the thing, fine. So it is the study of the nature of reality. Is there a single reality, a multiple realities, or it is completely fake, there is no reality at all? That study is called as ontology, right? So these are the questions that a philosophy of ontology attempts to answer, fine. If I take example, if I say does God exist, does God exist? So I can have the 2 answers for this question. Some people will say yes and some people will say no. So this question is concerned with your reality, the real life you are concerned about over here, the real life. So how you can relate this particular thing to your research? If you are providing some solution for your research topic, right? So there you have to understand whether that particular solution is suitable for the real life or not. That is only the concern over here, right? So this is the simple example I have taken over here in case of your ontology. Then next है हमारे पास epistemology. So epistemology आपको कैसे याद रखना है? It is related to your knowledge. It is related to your knowledge, the study of knowledge and how we can know the reality. That is your epistemology. It incorporates the extent and ways to gain the knowledge. किस तरह से आप जो है एक लंबे लेवल की the deep knowledge you can get from a particular thing for solving your real life problem, okay, and you have to relate that thing with the real life also, and then finally you will be able to like validate that particular knowledge whether it is correct for the real life, okay, it is accurate, it would be used or not, like these kind of questions, fine. So the frequently used example in epistemology is how is it possible to know whether or not God exists? ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होगा कि मैं जान पाऊं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है, करता है कि नहीं करता है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी। आई हैव टू लाइक I have to gather the complete information about this particular thing from the different people. I will take the reviews, ठीक है, तो फाइनली मैं एक कंक्लूजन पे आ सकती हूँ, हो सकता है वो ठीक ना भी हो, राइट, उसके लिए भी आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी होगी, फाइनली डन है ना। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस, ठीक है, फर्दर मैंने कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आगे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई विल टेक ऑल दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर,
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्शन जो भी लेसन होगा, लेक्चर होगा, रिकॉर्डेड सेशन, आई विल टेक ऑल दिस टॉपिक्स, सब सारा एक्सप्लेन करूंगी मैं। देन तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, सो टुडे वी हैड द पार्ट 2 राइट ऑफ योर रिसर्च। तो मैं डेली बेसिस पे डालती रहूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशंस फॉर ऑल द वीडियोस। ठीक है, अब एक रेगुलर पेज स्टार्ट हुए, आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस फॉर द नेक्स्ट ईयर दिसंबर एग्जाम। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने बताया, आई एम गोइंग टू टेक द डिटेल कोर्स ऑन पेपर 1 राइट। उसी में हम लोग MCQs भी कवर करेंगे, वी विल डू द मॉक टेस्ट ऑल्सो, वी विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, कंप्लीट ईयर का सेट हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देन जिस हिसाब से मैं पढ़ती थी उसी हिसाब से आई होप मैं पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, मैं वैसे ही करना चाहती हूँ। सो दिस इज द कंप्लीट कोर्स। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, you people can reach me out right। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को फीडबैक देना है या कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट सेक्शन के नीचे दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।